Parishrantendrayatmaham Trattapreto bubhukshitaha Natva pitva nadya Supasprishto gata shramaha. Thus traveling, I felt tired both bodily and mentally, and was both thirsty and hungry. So I took a bath in the river lake and also drank water. By contacting water, I got relief from my exhaustion. Srila Prabhupada writes, a traveling mendicant can meet the needs of body, namely thirst, hunger, by gift of the nature without being a beggar at the door of householder. The mendicant therefore do not go to the householder to beg, but to enlighten him spiritually. So this purpose is for all of us, that when we are going for preaching, it's not that we are going to collect money or to beg for something, we are going to enlighten them in Krishna consciousness. Srila Prabhupada says money is byproduct of preaching. If you preach, Krishna will provide abundantly. If you beg, then you will never be satisfied. We are not beggars, we are preachers. 15. Tasmin nira manuje aranye pipalo upasta ashrita atmanatmanam atmastam yatha shrutam achintayan. Nirmanuje means where there was no other human being. Koi aadmi nahi tha. Arane means in a forest. It means a forest where there was no human being. People upast isate. I was sitting under people tree. People tree mein Bhagwan Vishnu hai. People tree ashwatha sarvvrikshanam. Bhagwan 10वें अध्याय भगवद गीता में कहते हैं, people is my opulence. So people tree is auspicious tree और उसके नीचे बैठे. आत्मा नाम आत्मस्तम, अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करने लगे. कैसे? यथा श्रुतम, जैसे उन्होंने सुना था अपने गुरुजनों से. अचिंतयन, और चिंतन करने लगे या मेडिटेट करने लगे. After that, under the shadow of the banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon super soul situated within, using my intelligence as I had learned from liberated souls. Chakravarti Pad writes, only last line is important. I had developed prem. It means Devrishi Narad in his practice of devotional service has reached to the stage of awakening prem. Srila Prabhupada writes, one should not meditate according to one's personal whims. One should know perfectly well from authoritative sources of scripture through transparent medium of the bona fide spiritual master, by the proper use of one's trained intelligence for meditating upon super soul dwelling within every living being. This consciousness is firmly developed by a devotee who has rendered loving service unto the Lord by carrying out the order of the spiritual master. Shri Nathji contacted bona fide spiritual master, served him sincerely and got enlightenment rightly. Thus he began to meditate.
What is the meaning of transparent via media? Huh? It's not mirror. Transparent via media. Transparent glass. Okay. So Guru is like a transparent glass. So what it means? Transparent means both ways. You can see on the other side, and the person on the other side can see you. So how it works two ways. Mercy of the Supreme Lord through parampara reaches to the devotee. Service of the devotee through spiritual master parampara reaches to Krishna. That is the meaning of transparent via media. दोनों तरफ से काम करता है. हमारी सेवा गुरु के द्वारा भगवान तक जाती है और भगवान की कृपा परंपरा के द्वारा हम तक पाती है. अगर हमारी सेवा गुरु अपने लिए रख दे तो ट्रांसपेरेंट नहीं, वो एकदम अपने गुरु को देता है और उसका गुरु परंपरा के द्वारा भगवान तक पहुंचाता है. अगर अपने लिए रख लेगा तो ट्रांसपेरेंट वया मीडिया नहीं होगा. यहां दिल्ली के मंदिर में प्रभुपाद जी की व्यास पूजा हो रही थी. हाँ, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा बंदो मोरी सो मन. प्रभुपाद भी गा रहे थे. जिसकी आरती कर रहे थे तो प्रभुपाद भी वही गा रहे थे. तो एक साउथ इंडियन बहुत बड़ा तांत्रिक विद्वान था. आश्चर्य कि इसी की पूजा कर रहे, ये भी गा रहा. तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज खड़े थे. उनसे पूछा कि ये क्यों गा रहे हैं, इसकी पूजा हो रही है, ये क्यों गा रहे हैं? बोला हम इसके शिष्य हैं. महाराज ने कहा हम इनके लिए गा रहे हैं, ये अपने गुरु के लिए गा रहे हैं. तो उसने कहा ये फिर परफेक्टली बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. फिर वो प्रभुपाद का शिष्य बन गया. ये बोनाफाइड है. आत्म तत्व उसका नाम है. बड़ा विद्वान था, अभी भी है, लेकिन इसका से अंदर नहीं है, मिलता रहता है कभी. तो ये बोनाफाइड भक्त कह रहे थे श्रील प्रभुपाद की जय. प्रभुपाद कह रहे थे श्रील प्रभुपाद की जय. पूछा भक्त ने प्रभुपाद हम आपकी जय रहे, आप अपनी जय क्यों? मिला आपका प्रभुपाद है, मेरा भी प्रभुपाद है. मेरा भी प्रभुपाद है. सर ये है Guru never think that this worship is meant for me. It has to be transferred through parampara to Supreme Lord. So, next verse 16. Dhyayatas charanar bojam bhava nirjita chetasa auta kantyashro kalakshaya Dhyasinveshanai hari. Dhyayatas, when I was meditating, what I was meditating on? Some light? No, charana ambujam, lotus feet. I was meditating on the lotus feet. Bhava nirjita chetsa, I was at the stage of Bhava Bhakti. My Chetasa, my consciousness, my mind was Nirjit Chetasa. Mind transformed love for Lord. So I was at the stage of love of God, prema. What was the symptom of that? Autakantya Ashru, I was jubilant, I have tears in Kalaya Akshaya, my eyes were full of tears. Hridayasin me, and then I saw the Lord gradually, step by step in my heart. So I had a darshan of the Lord. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of Krishna regarded with my mind transformed in trance and love,
Tears rolled down from my eyes, and without delay, the personality of Godhead, Sri Krishna, appeared on the lotus of my heart. Chakravarti has given a little more insight in the purport. See, as I meditated in the mind, Hirde, with the mind, Chetsa, conquered by Prem, Bhava Nirjita. The Lord step by step made his appearance before me. Or Shanahi means gradually, can mean that first he appeared in the heart, and then he appeared in three functions of the mind: nose, ear, and eyes, which means so that I could experience the fragrance of his body, nose, the sound of his ankle bells, ear, and beauty of his face, eye. What happened to me? I had tears in my eyes because of longing. So this is something a little more that when we see God, it means we can smell the fragrance special of the lotus, tulsi and chandan at the lotus feet of the Lord. We can hear the ankle bends of the Lord. So this is a personal realization. Srila Prabhupada said, and Srila Prabhupada's purpose is the stages from the Shraddha to the prayer. All purpose is on that. I'm just reading. You can see the different stages now. The word bhava is significant here. This bhava stage is attained after one has transcended affection for the Lord. Affection means asakti. The first initial stage is called Shraddha, a liking for the Supreme Lord. And in order to increase the liking, one has to associate with pure devotees, sadhu sangha. The third stage is called bhajan kiya, practicing rules and regulation of devotion. This will dissipate all sort of misgiving, anartha nivarti, and remove all personal deficiencies and hamper progress in devotion. When all misgivings and personal deficiencies are removed, there is a standard faith, nishtha, and taste for it increases, ruchi. This stage leads to attraction, asakti. And after this, there is a bhav, or a prior stage of unallied love of God. All the above different stages, but different stages of development of transcendental love. Being so surcharged with transcendental love, there comes a strong feeling of separation, which leads to 8 different kinds of ecstasies, ashta sattvic bhav. Tears from eyes of the devotees are an automatic reaction, and because Sri Narada Muni in his previous birth attained that stage very quickly, after his departure from the home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord, which he tangibly experienced by his developed spiritual senses without material tinge. Spiritual senses mean he has seen the Lord with eyes, heard the ankle bell of the Lord and fragrance. So this is what Prabhupada meant by that. 17. Premati bharanirabhina pulaka ango atirvanaha adhbhutta ananda samplavelino napashyanu bhayam muni. O Vyasadeva, at that time being exceedingly overpowered by the feeling of happiness, every part of my body becomes separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Because that is also one of the ashta sattvic bhav, murcha, complete absorption. So, Chakravarti Pad writes, his limbs were covered with distinct goosebumps. This is one of the symptoms of ecstasy. Replication, hair standing on end, goosebumps. Because of excessive prem. This indicates that all his limbs develop the symptom of prem at that time.
Prem was difficult to bear. He then fainted out of bliss. Anand samplave leena. Laya, it's called laya. In Sattvic Bhava, that stage is called laya, means becoming unconscious. Srila Prabhupada writes, spiritual feeling of happiness and intense ecstasy have no mundane comparison. Therefore, it's very difficult to give expression to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasy in words of Sri Narada Muni. Each and every part of the body has senses at its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to the render service to the Lord. It means senses were purified at this stage of love of God. They are no more materially contaminated, means having no materially separate enjoying mentality except to serve the Supreme Lord. The senses were completely purified. Like when we go in the deity room for worship, we do some ritual called adhbhut siddhi. Yeah? Adhbhut siddhi. It means we purify our senses. So in the stage of love of God, they are naturally purified. And they all senses are ready to serve Lord, not to serve this selfish sense enjoyment. Because in the liberated state, it means at this stage of love of God, the senses are fully efficient in serving Lord. As such, in that transcendental exercise, it so happened that the sense becomes separately enlivened to serve the Lord. This being so, Narada Muni lost himself in seeing both himself and the Lord. 18. Rupam bhagavato yatan manah kantam suchapam apashyan sahasotate vaikalabhya durmanaiva. Now when one see God, what is the advantage? Rupam bhagavato yatan manah kantam. All the desire and the mind are fulfilled. Shucha paham. All lamentation finished. Sucha means lamentation. Sucha paham, wishing all disparity, vanishing all disparity. कोई श्लोक आ रहा है भगवद गीता में, उसमें ऐसी दो चीजें हों. ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति. वो स्टेज, that stage, exactly that verse is exactly like that. A person, then I could not see Lord. Saha sa uthaste. I immediately stood up. Vaikalabhyat, I was completely perturbed. Turmanaev, having lost the desirable. The transcendental form of Lord, as it is, satisfy the mind's desires and at once erase all mental incongruity. So there are two symptoms when one realizes Supreme Lord. All mind's desires are fulfilled and all the mental anxieties are completely finished. Upon losing that form, I suddenly got up and being perturbed, as is usual when one loses that which is desirable. As I lost the treasury, I become despondent like someone has lost treasure. Srila Prabhupada said that the Lord is not formless, because Lord's rupam.
Bhagavato Rupam. It's not formless, but its form is not material. In the whole life, we see so many forms. Prabhupada is comparing the form of Lord with the material forms. Our mind is never satisfied by these different forms in this world. But none of them is just apt to satisfy the mind, nor can any one of them vanish all pursuits of the mind. दुनिया के किसी भी रूप से न मन शांत होगा और न मन की चिंताएं जाएगी. कोई स्टोरी याद आती है ऐसी? These are a special feature of transcendental form of the Lord. And one who has once seen that form is not satisfied with anything else. No form in the material world can any longer satisfy the seer. तो जी बोलिए, कोई एग्जाम्पल आ रहा है याद? Parikshit Maharaj when saw the Lord in the mother's womb, then he was always looking who was the Lord. He was only when he saw Krishna, then he was satisfied. Or some other good example? Dhruva Maharaj was seeing Lord inside, then disappeared, then he was surprised, but he saw the Lord outside immediately. So there was nothing like. All those desires, everything was finished. His all material desires were finished. Yes, Dhruva Maharaj's all material desires were finished. Yes, Dhruva Maharaj is a good example. Maharaj Indradyumna when he saw Neel Madhav said Indradyumna Maharaj? No. Indradyumna Maharaj never saw Neel Madhav. He went there, he disappeared before that. One story sometime, most of the time we hear of Ramanuja Sampradaya, Dhanurdhar. The Ranganath's procession was going and he was with his girlfriend. Ramanuja was merciful. He said, why you are doing this? He said, oh, I cannot survive without seeing. Say, I can show you something. Then he showed the Ranganath, and after that he became a great lover, a great devotee. So once he saw, then no material things can satisfy him. Dhanurdhar is a one story. Dhanurdas. And all the pain disappears, mental anguish disappears after seeing the Lord. Some other example. Bhisham Dev. He has every inch of body pierced with arrows, but as soon as he saw Krishna, all his pain disappeared. And Prabhupada writes in that purport, no medicine or medical science or any science can do that, what the audience of direct Supreme Lord has accomplished in Bhisham Pitama. These are some example how this works. Okay? As the spiritual beings having eternal relation with that transcendental form, we are life after life searching after that form of the Lord, and we are not satisfied by any other form of the material appeasement. Narad Muni got a glimpse of this, but having not seen it again, he became perturbed and stood up all of a sudden to search it out. What we desire, life after life, was obtained by Narad Muni. And losing sight of that again, he was certainly a great shock for him. So Prabhupada's purpose saying we should be eager to have that form. The darshan of that form, which we are trying, we are never satisfied in life, and Narad got that.
In other words, Prabhupada's purpose line giving us inspiration that we should be eager to see the form of the Lord. And for this practice, Chaitanya Mahaprabhu, though in Kali Yuga it is forbidden, it's not a Kali Yuga is not a deity worship method for self-realization, but he established the temples that we can have a darshan of the Lord and we can have attachment to the deities of our dear deities of the temple. And seeing that darshan every day should be our meditation. Okay, next verse 19. Didrikshustadaham bhoyaha pranidhaya manoharde Vikshamano pina pasyam avitriptaha eva aturaha. I desire to see again the transformed form of the Lord. But despite my attempt to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. Prabhupada says, there is no mechanical process to see the form of Lord. It means, Narad Muni again did Akshman, again he started chanting same mantra, but there was no appearing of the Lord in the heart. So Prabhupada says, there is no mechanical process to see the Lord. It means by our endeavor we cannot see the Lord. How can we see Lord? It completely depends on the causeless mercy of the Lord. Then analogy. We cannot demand the Lord to be present before our vision, just as we cannot demand the sun to rise whenever we like. Sun only rises at its own time. Not in the middle of the night, you say, sun, you rise, it's not possible. So, like, the Lord can be seen by his own causeless mercy. One should simply await the opportune moment to go on discharging his prescribed duty in devotional service. Narad Muni thought that Lord should be seen again by the same mechanical process which was successful in the first attempt. But in spite of his utmost endeavor, he could not make the second attempt successful. The Lord is completely independent of all obligation. He can simply be bound up by the tie of unalloyed devotion, nor is he visible or perceivable by our material senses. When material sense, it means at that time senses of Narad was purified. All these senses become separately awakened, enlightened. When he pleases, Krishna pleases, being satisfied with the sincere attempt of devotional service, depending completely on the mercy of the Lord, then he may be seen out of his own accord. Any verse you can quote on this purport? But Prabhupada is like writing this thing. I am reading again. The Lord is completely independent of all. When it is complete and mercy, no, it's not exactly. But any verse, yes. Yes, this is the verse. What is the first line of the verse? Sri Krishna Namavadi na bhaved indriya. By senses we cannot see Krishna. Jivadao savam ev usprade adh. When Krishna is satisfied by our service, which is started with the tongue, by chanting and honoring Krishna Prasad, ultimately if Krishna is satisfied, then he can reveal. ठीक है, ये श्लोक यहाँ इसके परपट में कहा जाएगा. एवं यतन्तं विजन्ने माम आहागोचरो गिरान गंभीरस्य लक्षण्या वाचा शुचः प्रशमयन् एव. ऐसी हालत जब नारद जी की थी तो उस समय उनको एवं
yatantam. Yatantam means he was endeavoring. यतन करना. He was endeavoring. प्रयास कर रहा था, यतन कर रहा था. विजने. विजने. कोई जन वहां नहीं था. It was a lonely place. कोई नहीं था और. We means without. जने means human beings. ऐसी जगह पे माम अहा अगोचर गिराम. उस वक्त मैंने अगोचर गिराम. गिराम मतलब आवाज. गिरा कहते गले को. गले से निकले वाला एक आवाज. अगोचर मतलब मैं देख नहीं पा रहा. I can't see but I heard. Agochar, beyond the range of physical sound. Gambhir, it was very gambhir, grave. Silakshanya, pleasing to hear. Shuchaha, all my grief. It was removing grief. Prashammayan, iva, mitigating. My all grief was mitigated. मतलब मेरा चिंता मुक्त हो गया मैं उस वाणी को सुनकर. Seeing my attempt in that lonely place. Seeing my attempt, कौन सा वर्ड ट्रांसलेट हुआ? यतन. यतन. Attempt, yatan. Lonely place, vision. The personality of Godhead who is transcendent to all mundane description, agochar, spoke to me with gravity, gambhir, pleasing word, silakshanya, just to mitigate my grief, sucha prasanna. Chakravarti Pad's commentary. The Lord is beyond the description of word, gram agochar. तो ग्राम अगोचर दोनों शब्द इकट्ठे पढ़ेंगे तो इसका माना है भगवान हमारी वाणी से परे हैं. We cannot describe God because God is beyond material words. As stated in Shruti, Traitya Upanishad, Yato vacho nirvatante nivaratante, the lords from whom words return without attaining him. मतलब शब्द भगवान तक नहीं पहुंच सकती. The Lord who cannot be approached by words spoke to me. I had an experience of his sweet sounding words by my ears because Narad had bhakti arising from Vedic sadhan. Narad has a bhakti arising from Vedic sadhan. Narad is example of Vedic sadhan bhakti which mature into Vedic sadhan prem. Vedic sadhan bhakti leads to Vedic sadhan bhav, and Vedic sadhan bhav leads to Vedic sadhan prem. तो दूसरा कौन सा है? रागनोगा साधन, रागनोगा भाव, रागनोग्या प्रेम. तो नारद इज द एग्जाम्पल ऑफ वैदिक साधन भक्ति. वैदिक साधन भक्ति का स्टेज था. He had realization of sweetness of Lord's fragrance by his nose, beauty by his eyes, and speech in his present body. Speech means by ear. जो पहले पढ़ के आए कि उसने उसके माइंड के 3 फंक्शन में ग्रेजुअली फ्रेग्रेंस, रूप, आईज, ईयर, साउंड, he experienced that. The complete experience with all other type of sweetness, touch and taste, etc. would be experienced in the future in his spiritual body, Siddha. क्यों नारद को दर्शन भगवान ने देना बंद कर दिया? क्योंकि अभी उसकी सिद्ध देह प्राप्त नहीं हुई थी. ये आगे अब यहां पढ़ेंगे लास्ट लाइन में. By this his sweet words, the Lord removed all types of lamentation and suffering which had arisen by not seeing him. The word if somewhat is used because his love and longing caused by separation had not been fully satisfied.
थोड़ी देर के लिए आवाज ने शांति दी, लेकिन पूर्ण नहीं। सो यहां हमने दो बातें देख रहे हैं कि एक साधन की स्टेज होती है, एक सिद्ध की स्टेज होती है। श्रील प्रभुपाद का परपट, in the Veda it is said that God is beyond approach of mundane words and intelligence. अगोचर गिरा, अगोचर गिरा की प्रभुपाद का ये जो तात्पर्य है, फॉर द अगोचर गिरा। And yet by his causeless mercy one can have suitable senses to hear him or to speak to him. This is the Lord's inconceivable energy. One upon whom his mercy is bestowed can hear him. The Lord was much pleased with Narad Muni, and therefore therefore the necessary strength was invested in him so that he could hear the Lord. ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसने उसको भी भगवान ने सुनने के लिए सामर्थ्य दिया और दूसरे कोई नहीं सुन पा रहे थे? संजय को व्यास देव ने दिव्य दृष्टि दी थी, वो भगवान को, वो महाभारत के युद्ध को सुन पा रहा था। ब्राह्मण साक्षी गोपाल के साथ जा रहा था। ब्रह्मा जब प्रार्थना करने गए क्षीर सागर, और किसी देवता को कुछ सुनाई नहीं दिया, ब्रह्मा के हृदय में सब कुछ सुनाई दिया, है ना, तेने में, बाकी देवताओं को नहीं। वहां लिखा है, इवन ब्रह्मा कुड नॉट सी गॉड, ओनली गॉड हैज सेंट मैसेज इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा, नोबडी एल्स हर्ड। ब्रह्मा वाला विविड एग्जाम्पल है, और साक्षी गोपाल वाले में कहा, मतलब ऐसा सुना, ऐसा कुछ मैं एग्जैक्टली ऐसे नहीं है। डेफिनेटली भगवान विटनेस बने। तो दूसरा कौन सा एग्जाम्पल दिया? संजय वाला भी व्यासदेव की दिव्य दृष्टि थी उनको, तो थोड़ी देर के लिए उसने ये काम किया। उससे ऐसे भक्ति से नहीं हुआ कि उसके, ये तो कृपा सिद्धा है, लेकिन उस नारद जी तो साधन कर रहे हैं। अब ये देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट हाउएवर पॉसिबल फॉर अदर्स टू परसीव डायरेक्टली द टच ऑफ द लॉर्ड ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी स्टेज ऑफ रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस। इसका मतलब क्या है? प्रोबेशनरी स्टेज ऑफ रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस, साधन भक्ति के समय ये नहीं पॉसिबल है। नारद को हो गया, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है साधन भक्ति में। It was a special gift for Narad. When he heard the pleasing words of the Lord, the feeling of separation was to some extent mitigated. A devotee in love with God feels always pangs of separation and is therefore always enwrapped in the transcendental ecstasy. Vipralamba bhav. Verse 22. Hantasmin janmani bhavan mamam drishtum iharati avipakvaha kasayanam durdarshoham kwayoginam। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हालांकि आपके क्लोज बुक में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हंत, हंत एड्रेस है, भगवान बोल रहे हैं। ये वो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान नारद को संबोधन कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हंत किसी से बहुत स्नेह है, उससे बात करते हैं, मेरे पुत्र ऐसे, ये मेरे बेटे। ये हंत संबोधन जो है ये लिखा है, हंतम, दिस इज एन एड्रेस मेड आउट ऑफ अफेक्शन। भगवान ने स्नेह पूर्वक कहा, हे नारद, जन्मनि भवान माम दर्शम, अब इस जन्म में दोबारा मेरा दर्शन नहीं होगा। भगवान ने क्या कहा?
अब दोबारा इस जन्म में मेरे प्रिय नारद मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अविपक्व, आप पूर्ण पक्के नहीं हो, अभी तक कच्चे हो, इमेच्योर हो। दूसरा, कसायाणाम, कसायाणाम का मतलब अभी भी कुछ भौतिक कलमश दोष या डर्ट आप में है। फिर सिद्धांत, दुर्दर्शो अहम कुयोगी नाम, जो योग्य नहीं है उनके लिए मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है। दुर्दर्शो बहुत मुश्किल है, कुयोगी नाम इनकम्प्लीट इन सर्विस, ये सिद्धांत है। अब नारद में कौन सी कच्चापन था? एक आपको बताया पहले, कौन सा? फॉरेस्ट में भगवान को ढूंढने गया। क्यों? फॉरेस्ट में भगवान मिलता है, और जगह पे नहीं है क्या? तो सब जगह पे है। फॉरेस्ट में सतोगुण है, सतोगुण के लोग फॉरेस्ट में जाते हैं। सो मोड ऑफ गुडनेस इज आल्सो मटेरियल मोड ऑफ गुडनेस। इसलिए, और इससे भी अच्छा एक परपट चक्रवर्ती पाद ने इसके ऊपर लिखा है, ये लाइन ध्यान में देनी है। चक्रवर्ती प्रश्न उठाते हैं पहले, भगवान कहते हैं इस जन्म में आप मुझे नहीं देख पाओगे क्योंकि आप अभी तक पक्के नहीं हो और कुछ भौतिक आपके अंदर दोष है। तो नाथ कहते वाह, व्हाट डिड ही से इन द बर्थ हैविंग बॉडी ऑफ द प्रैक्टिशनर, इन दिस बर्थ हैविंग द बॉडी ऑफ प्रैक्टिशनर यू कैन नॉट सी मी, क्योंकि अभी आप साधक देह में हो। अब आप साधक देह में हो, इसलिए मुझे देख नहीं सकोगे। आई एम विजिबल, आई एम इनविजिबल, दुर्दर्शन, मैं दिखाई नहीं देता हूं। किसको? फॉर दोज फॉल्टी प्रैक्टिशनर ऑफ योगा, कुयोगी नाम, जो योग अधूरा करते हैं, गलत करते हैं, उनको मैं दिखाई नहीं देता हूं। Whose contamination such as lust have not been burned up. No, Jiva Goswami writes, some person purify themselves but remain with sattva-gun. They purify themselves but remain with sattva-gun. क्योंकि सत्वगुण का प्रभाव तो नारद में था, तब तो वन में गया था। And thus are attached to living in the forest. The intention here is to say, but I showed myself to you. एक बार मैंने आपको दर्शन दिया, therefore you are not a faulty practitioner. आप कुयोगी नहीं हो क्योंकि मैंने आपको एक बार तो दर्शन दिया, परंतु अभी भी आप में थोड़ा सा सतोगुण का दोष है, उसको भी त्यागना पड़ेगा। प्रभुपाद का परपट कौन पढ़ेगा? पढ़िए। Described in the Bhagavad Gita as the most pure, the supreme and the absolute truth. There is no trace of a change of material. अरे भैया, ये कहाँ लिखा है भगवद गीता में? कोई बताओ जरा। भगवान बहुत पवित्र है। हाँ, एग्जैक्टली वर्ष को ढूंढो, फिर जहां ये लिखा है भगवद गीता में लिखा है उसके सामने लिखो भगवद गीता वर्ष नंबर फलाना। मोस्ट प्योर, दसवें अध्याय का है। अर्जुन कह रहा है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम, वही है। वहां से इतना टुकड़ा प्रभुपाद ने यहां लिखा, भगवद गीता में लिखा है। तो आपको ढूंढ के लिखना चाहिए, ये दसवें अध्याय का ये श्लोक है। ठीक है, आगे पढ़िए। There is no trace of a tinge of materiality in his person. Thus, one who has the slightest tinge of material affection cannot approach him. The beginning of devotional service starts on the point when one is freed from at least two forms of material modes, namely the mode of passion and mode of ignorance. The result is exhibited by the signs of being free from Canto. Thus, ये भी एक श्लोक है भागवत का, बताओ। ये भागवत का श्लोक है, प्रभुपाद ने ऐसे कैसे लिखा है? कौन सा है? आप पढ़ के आए?
आप पढ़ के आए हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में है। सदा रजस्तम भावा लोभ आद्य, ये श्लोक है। पहले ये दोष जाना चाहिए, ये श्लोक है ना, ये श्लोक लिखा हुआ है एज इट इज, देख लो। तो ये भी आपको यह नोट करना चाहिए, ये भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 19वां या 19 होगा, 19 या 20 होगा, 19-20 है, कहीं भी देख ले कौन सा है, ये श्लोक है। फिर आगे पढ़िए। That is to say, one must be free from the desires for self-satisfaction and otherwise for self-gratification. The balanced mode of nature is goodness, and to be completely free from all what it is to become free from the mode of goodness also. To search the audience of God in a lonely forest is considered to be the mode of goodness. One can go out into the forest for excellent perfection. That does not mean that one can see the Lord personally there. One must be completely free from all material attachment and be situated on the plane of transcendence, which alone will help the devotee get in personal touch with the personality of God. The best method is that one should live at a place where the transitive form of the Lord is worshipped. What it means? Live in the temple. Now there is a verse in 11th canto of Bhagavatam which says, तमोगुण के लोग नशे के दुकान के पास रहते हैं, रजोगुण के लोग स्टॉक मार्केट के पास रहते हैं, सतोगुण के लोग वन में नदी के किनारे रहते हैं, तीनों गुणों से परे लोग मम निकेतनम, मेरे मंदिर में रहते हैं। तो जो मंदिर में रहते हैं तीनों गुणों से परे हैं। तो प्रभुपाद ने जब ये लिखा है तो ये श्लोक प्रभुपाद जी के हृदय के ऊपर स्फुरित हो रहा था, तब ऐसे लिखा है कि मंदिर में रहना चाहिए, वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे होता। ठीक है, हाँ जी। The temple of the Lord is a transcendental place, whereas the forest is a materially good habitation. The neophyte devotee is always recommended to worship the deity of the Lord Archan, rather than go into the forest to search out the Lord. Devotee's service begins from the process of Archan, which is better than going out in the forest. In his present life, who is completely free from all material hankerings, the Narad Muni does not go into the forest. Although he can turn every place into Vaibhava by his presence only, he travels from one planet to another to convert men, gods, kingdoms, gandharvas, rishis, munis, and all others to become devotees of the Lord. By his activities, he has engaged many devotees like Prahlad Maharaj, Sarvabhauma Maharaj, and many others in the transcendental service of the Lord. A pure devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of the great devotees like Narada and Prahlad and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of kirtan. Such a preaching process is transcendental to all material worlds. तो नारद में क्या इमेच्योरिटी थी और कोई दोष था क्या नारद में? ये परपट की लाइन आप अभी देखेंगे। सकृद यद दर्शितम रूपम एतद कामयाते अनग मत काम संकहि साधो सर्वमुच्यते गच्छाम। सकृद एक बार, सकृद एक बार, यद दर्शितम रूपम, मेरे रूप का दर्शन हो जाए, एतद कामयाते अनघ, हे निष्पाप नारद, आपकी कामना थी, आपकी इच्छा थी, आपने एक बार मेरे दर्शन किया। मत काम शंक ही साधु, अब आपकी मेरे को पाने की इच्छा और बढ़ती जाएगी, आपको विप्रलंब भाव उत्पन्न होगा, आप इसको दोबारा देखना चाहोगे। सर्वान विपत्ति हृदय, तो आपके हृदय में जितने भी बंधन है वो सब खत्म हो जाएंगे, दोष खत्म हो जाएंगे। ओ विर्चुअस वन, अनंग, अनंग मतलब निष्पाप, जनरल अघ मीन्स पाप, अनघ मीन्स निष्पाप, उसको प्रभुपाद ने यह लिखा है, ओ विर्चुअस वन, यू हैव ओनली
once seen my person, and this is just to increase your desire for me. भगवान सब भक्तों को एक अनुभव देते हैं अपनी उपस्थिति का। क्यों? टू इंक्रीज अवर डिजायर टू हैव हिम मोर, बिकॉज द मोर यू हैंकर फॉर मी, द मोर यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। जितना मुझे पाने की अधिक इच्छा करोगे उतना भौतिक इच्छाओं से मुक्त होगे। सब भक्तों को नारद की तरह दर्शन नहीं, लेकिन अनुभव भगवान जरूर देते हैं, और उस अनुभव की वजह से वो भक्ति छोड़ नहीं पाता है, और वैसी और चीज कहीं उसको मिलती भी नहीं है। आपको कोई ऐसा अनुभव है? किसी को कोई ऐसा अनुभव जीवन में? सबको होता है। रोज कीर्तन करते हैं, दसों सालों से कर, लेकिन एक दिन कभी ऐसे कीर्तन में आनंद आया होगा, आंखों में आंसू हो गए, पता नहीं आप कुछ अलग ही महसूस किया होगा। पढ़ते रोज हैं, लेकिन एक दिन अकेले बैठे पढ़ रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, एक और अद्भुत अनुभूति हो रही थी। एक दिन होता, एक बार है, बार बार नहीं होता। कभी अपने हाथ से प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा खाया, बोला ऐसा तो कभी स्वाद आया ही नहीं। होता जरूर है। अब इस परपट को ध्यान से रखना है। नारद में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ डिफरेंस क्या है ये देखिए। ये चक्रवर्तीवाद का परपट पढ़ते हैं, चक्र प्रश्न उठाते हैं चक्रवर्ती, बट जस्ट यू शो योर सेल्फ वंस मोर टू मी। अरे एक बार दिखाया तो एक बार दोबारा दिखा दो ना। तो भगवान कहते हैं, seeing me only once, not many times, is enough to produce desire for me, kamya. By only slight increase in longing, prem, will not develop to the state of youthfulness in a person having somewhat weak prem. जब आपका प्रेम ही कमजोर है, तो जब तक प्रेम पक्का नहीं होगा तब तक आप दोबारा नहीं देख पाओगे। तो कच्चा प्रेम क्या है? My rule is that, भगवान कहते हैं, my rule is that I show myself one time only to the person practicing in his present body in this साधक देह। इस देह में जिसमें हम हैं, प्रैक्टिस करते हुए एक बार मैं आपको अनुभव जरूर देता हूं साधक देह में। Who has developed प्रेम, जो किसको देता हूं? जो जिसने प्रेम, जिसके हृदय में प्रेम जाग गया। प्रेम जिसके हृदय में, जो प्रेम के स्तर पे पहुंच गया है, उसको एक बार मैं जरूर दर्शन देता हूं। The infant stage of prem in the sadhak body matures to a youth state in a siddha deha by an increase of prem arising from longing in separation. वही जब आपको सिद्ध देह प्राप्त हो जाएगी तो आपका प्रेम पक्का हो जाएगा। तब तक मैं दर्शन दोबारा नहीं दूंगा जब तक सिद्ध देह की अनुभूति नहीं हो गई हो। That youthful prem allows the devotee to see me constantly and serve me directly. I alone and not my devotees know the process of fulfilling the desire of my devotees. मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, भक्त भी नहीं जानता है कि भक्तों की इच्छा कैसे पूरी की जाए। You who simply desire me, mat kama, even without having seen me, will become free from all desire for material enjoyment. Irshya. This statement does not actually apply to Narad. Why? Since he did not have any material desires. नारद तो पहले ही 5 साल का भौतिक जगत ही छोड़ के आया था ना, तो नारद में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। फिर भगवान ने ऐसे नारद को क्यों कहा? Being at the level of prem already, Narad was already at the level of prem. But saying this, the Lord shows the nature of devotion. Additionally, by saying this, the Lord increases humility of Narad. तो नारद को भगवान ने ये क्यों कहा? पहले तो साधक देह में था, तो एक बार ही देता हूं, मेरा रूल ये है, भगवान कहते हैं। और दूसरा, तुम्हें भले भौतिक इच्छा नहीं है,
परंतु मैं दोबारा तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। इससे तुम्हारे अंदर मुझे दर्शन करने की लालसा और बढ़ेगी, हैंकरिंग और बढ़ेगी। और हैंकरिंग बढ़ाने के लिए ही मैं ये कह रहा हूं। एक तो आपकी हैंकरिंग बढ़े और प्रेम और मैच्योर हो जाए, इसलिए कह रहा हूं। और दूसरा, आप में ह्यूमिलिटी आए, निम्रता आए। नहीं तो जाके डंडोरे पीटोगे, रोज मेरे को भगवान दर्शन देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो है, नारद को क्यों कहा अपविपक्व है, कषायणाम है? तो एक तो सतोगुण वाली बात है, दूसरी ये है कि सिद्ध देह और साधक की देह में दोबारा दर्शन नहीं होता। नारद को कोई भौतिक डिजायर नहीं है, फिर भी नारद की ह्यूमिलिटी और हैंकरिंग को इंक्रीज करने के लिए भगवान ने ऐसे कहा। तो ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां है। श्रील प्रभुपाद का परपट पढ़िए। यस। Living being cannot vacant of desires. He is not that strong. He must work into feeling and living. But when he thinks, feels, and wills materially, he becomes entangled, and conversely, when he thinks, feels, and wills for the service of the Lord, he becomes gradually freed from all entanglement. The more a person is engaged in the transcendental loving service of the Lord, the more he acquires hanging for it. That is the transcendental nature of godly service. Material service has satiation, whereas spiritual service of the Lord has neither satiation nor end. One can go on increasing his hankering for the loving transcendental service of the Lord, and yet he will not find satiation or end. By intense service of the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendently. Therefore, seeing the Lord means being engaged in His service, because His service and His person are identical. The sincere devotee should go on with sincere service to the Lord. The Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. There was no material desire in Narada, and yet, just to increase his intense desire for the Lord, he was so advised. So Prabhupada के तात्पर्य में Prabhupada says, somehow or other you all have to have some desire and to do something. Now you have two options. या तो अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करो या भगवान की सेवा की इच्छा करो। You have to do that. उसके बाद प्रभुपाद आते, अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो कभी भी उसमें अब हो गया ऐसा नहीं कहोगे, और करने की इच्छा होगी, कभी तृप्ति नहीं होती। और वर्त आनंदम बुद्धिवर्तनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, एक एक पग पग के ऊपर आनंद बढ़ता जाएगा। इट इंक्रीजेस मोर एंड मोर। उसकी एंड तो है ही नहीं, अनंत है। इसका मतलब कि सेवा में लगने वाला और सेवा चाहेगा, और सेवा चाहेगा, क्योंकि इसका एंड तो है नहीं और इसमें कभी फीकापन आता ही नहीं है। कोई थक गया वही भाई काम कर करके, ऐसा नहीं होता है। इट इंक्रीजेस मोर एंड मोर। और फिर लास्ट लाइन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के भाव के प्रवर, नारद की कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान ने उसके विप्रलंब अभाव को बढ़ाने के लिए ऐसे कहा। और वो जो दो बातें आपको बताई वो भी लिखें। साधक देह में इतना ही दर्शन दे सकते हैं, सिद्ध देह के बाद भगवान को नित्य दर्शन भगवान का कर सकते हैं। 23 सतसेव्यादृग्रहयापि जाता मयि दृढ़ा मति हेत्वाद्यम इमं लोकम गंता मज्जंताम असि। By service of the absolute truth even for few days। देखो यहां जो शब्द है ये सत्य सेवया, इस सत्य के दो अर्थ हैं। सत्य का मतलब भगवान भी है, सत्य का अर्थ भक्त भी है। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, वहां सताम का अर्थ भक्त है।
इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सताम का अर्थ यहाँ भगवान लिखा है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। और चक्रवर्ती पाद ने देखो सताम का अर्थ लिखा सर्विंग द डिवोटीज, सर्विंग द डिवोटीज और सर्विंग द लॉर्ड। और प्रभुपाद के तात्पर्य में नीचे आएगा सर्विंग द लॉर्ड और डिवोटीज सेम। तो सताम सेवया शब्द जो है इसमें श्लोक में देखिए, सताम सेवया का मतलब भगवान की या भगवान के भक्त की सेवा। लेकिन जो पहले पर्पट हमने पढ़ा 22, उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान को देखना या भगवान की सेवा करना एक ही बात है। सीइंग गॉड और सर्विंग गॉड इज वन थिंग। तो सर्विस से ही भगवान को देखा जा सकता है। अब सतसेवया, सतसेवा अधिगृहा, इसका मतलब अदीर्घया, दीर्घ मतलब बहुत समय, अदीर्घ मतलब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए भी भगवान की या भक्त की सेवा की जाए। जाता मई दृढ़ मति, तो मेरे को प्राप्त करने के लिए दृढ़ बुद्धि उसकी का जन्म हो जाएगा। जाता जन्म हो जाएगा, हैविंग अटेंड, जन्म, जाता का मतलब जन्म होना। दृढ़ मति, मेरे को प्राप्त करने की दृढ़ बुद्धि हो जाएगी। हित्वा अवध्यम इमम लोकम गंता मद जनताना, मन जनताम, फिर ये भौतिक जगत को छोड़ के मेरा पार्षद बन जाएगा। मद जनताम, हरिजन बन जाएगा, मेरा पार्षद बन जाएगा। थोड़ी सी भी सेवा भगवान की थोड़े समय के लिए करे या भक्त की करे। सो बाय सर्विस टू एब्सोल्यूट ट्रुथ इवन फॉर फ्यू डेज ए डिवोटी अटेन firm fixed intelligence in me, consequently goes on to become my associate in the transcendental world after giving up material present deportable body. By serving the devotees for even a short time. ये देखो सत्य दोनों का अर्थ दो है, दो बार आया गया। Your intelligence become firmly fixed in me. When you give up this body of low birth, you will become my associate. श्रील प्रभुपाद का पर्पट, serving the absolute truth means rendering service unto the absolute truth, Godhead under direction of bona fide spiritual master. अब देखो सतान में गुरु भी आया और भगवान भी आया, सत्य में दोनों आया। अब फिर आगे और देखिए, who is transparent medium between the Lord and the neophyte devotee. The neophyte devotee has no ability to approach the Supreme Personality of Godhead by strength of his present imperfect senses, and therefore under the direction of his spiritual master, he is trained in transcendental service of the Lord. And by such training, even for some days, the neophyte devotee gets intelligence in such transcendental service, which leads him ultimately to get free from repeated inhabitation in the material world, and to be promoted to transcendental world to become one of the liberated associates of Lord in the kingdom of Lord. प्रभुपाद जी ने सताम में अल्टीमेटली जो भक्त के संग को गुरु का संग लिखा है। गुरु का संग, भगवान का संग, भक्त का संग, तीनों अर्थ इसका। सत्य सेवया के तीन अर्थ हो गए। अब भगवान, भगवान गुरु के माध्यम से भगवान, और भक्त की संग, तीनों, द थ्री कैन बी एक्सेप्टेड। मतरमयी निबद्धेयम न विपद्येत करचे, प्रजा सर्गे निरोधेपि स्मृति च मद अनुग्रहात्। ये श्लोक हम पहले पढ़ चुके हैं, 24वां श्लोक। एक बार जिसकी मति मुझ में लग जाती है, फिर न सृष्टि या प्रलय के समय मेरी कृपा से उसकी स्मृति नाश नहीं होती, उसको सदा सब याद रहता है। Intelligence engaged in my devotion service cannot be thwarted at any time, even in the time of creation or as well as the time of annihilation. Your remembrance will continue by my mercy. नारद को कहा है, ठीक है। और ये हम तात्पर्य भी पढ़ चुके हैं, वो ग्रेजुअल वाला पढ़ा था। कौन सा श्लोक अपने भगवद गीता का यहाँ कोट किया था? देखो ये परपट में देखो, भगवद गीता लिखा है, कौन सा श्लोक है? अनेक जन्म संग सिद्धिम, 6ठे अध्याय वाला हमने डिस्कस किया था, राइट? 25। एतावदोत्कवो परमात्मः
भूतम नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे शृण्वानवानं विवधे अमुकंपितः अनुकंपितः। ये भगवान की वाणी अब सुनना बंद हो रही है। एतावाद इस प्रकार से उक्त उपरामा, जो बात भगवान कर रहे थे वो समाप्त हो गई। तन महत भूतम, महत भूतम जो शब्द है ये भगवान का नाम है महत भूत। नभो लिंगम, आकाश में अलिंगम दिखाई नहीं दे रहा था, ईश्वरम। अहम च तस्मै महताम मह्यसे सृष्ण, मैं अब उस भगवान को सृष्ट वनामनम, मैंने प्रणाम किया। वाणी बंद हो गई, मैंने ऐसे उनको प्रणाम किया। विद्धते अनुकंपित, मेरे ऊपर उन्होंने कृपा की। देन दैट सुप्रीम अथॉरिटी personified by sound and unseen by eyes, lingam aling ishwaram, stop speaking, ukta ukta uparama, uparama means stop. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisance unto him, bowing my head, anukampitah, नहीं लिखा अनुकंपित। Having spoken this, the Lord, whose words are highest proof, ऊपर ने इसको अथॉरिटी लिखा है, whose words appeared in the sky, nabha, lab nabha lingam, who was not visible to the eyes, a lingam, and who was capable of bestowing mercy, anugrah, to the most fallen boy, the Lord stopped speaking. Receiving his mercy, anugrah, I bowed my head to a great taste of great. Mahadbhavam is the name of God, Lord, in a neuter gender. भगवान पुरुष है कि स्त्री है, इन दोनों के बीच में है। ये जो महद्भूतम है भगवान का कौन सा नाम है? न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, ये न्यूटर। द श्रुति सेज अस्य महतो भूतस्य निहस्वस्तिम एतद् यद ऋग्वेद। द ब्रीदिंग ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड महद्भूत, भगवान के श्वास लेने को महद्भूत कहते हैं। इस ऋग्वेद बृहदारण्य के उपनिषद, सिंस हिज ब्रीदिंग इज 4 वेदस, और भगवान सांस लेते हैं 4 वेद निकलते हैं। दिस वर्ड, हिज वर्ड्स आर हाईएस्ट प्रूफ, इसका मतलब जो ये शब्द प्रभुपाद ने लिखा है सुप्रीम अथॉरिटी, इस ट्रांसलेशन में सुप्रीम अथॉरिटी है, ये है महद्भूतम। इसका मतलब जिसके श्वास से वेद निकलते हैं, और वेद बड़ी अथॉरिटी है। ये समझ में आया क्यों लिखा है सुप्रीम अथॉरिटी? सिंस ही गेव ब्लेसिंग इवन टू मी, अनुग्राम, बच्चे को, एक दासी पुत्र को, ही इज कॉल्ड द सुप्रीम लॉर्ड ईश्वरम, वो समर्थ है। भगवान ने नभ में आवाज को छोड़ा, इसलिए भगवान को नभो लिंगम कहते हैं, और आलिंगम इसलिए कहते हैं दिखता नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं वो 4 वेद निकलते हैं, इसलिए भगवान को महद्भूत कहते हैं। वो बात लिखिए। फिर लिखा है ऐसे गीता भी तो भगवान के मुख से निकली है, तो गीता भी महद्भूत है। भगवान के मुख से निकला वेद, इसलिए भगवान का नाम महद्भूत है। सिमिलरली भगवत गीता इज साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड
and there's no difference between in identity. The conclusion that Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendent sound. इसका मतलब भगवान को गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से देखा जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है, भागवत के हर पन्ने पे भगवान को देखा जा सकता है। उसके लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए आहार शुद्ध होना चाहिए, ऐसे पूरा इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। 26 नामानि अनन्तस्य हतृप्त पठन् गोयानि भद्राणि कीर्तानि च स्मरन् गान् पर्यटन् स्तुष्ट मनागत स्पृहा कालम प्रतीक्षम विमद्धो विमत्सरा। अब भगवान का दर्शन भी हो गया, भगवान का उपदेश भी हो गया नारद को। अब नारद ने क्या किया, ये श्लोक कह रहा है, नामानि अनंतस्य, उस अनंत के अनंत नामों का हत तृप्त पठन, मैं तृप्त नहीं हो रहा था, पाठ करता जा रहा था। गायन्ति गुह्यानि, जो बहुत गोपनीय है, भद्राणी मंगलकारी है, कीर्तानी, कीर्तानी गुह्यानि मिस्टीरियस, भद्राणी बेनिफिक्टरी, कीर्तानी भगवान का क्या लीलाएं, सुमरन उसका सुमरण किया। गाम पर्यंटस, पर्यंटस इस धरती के, गाम मन गामाविष्यांच भूतानि, भगवद गीता है ना, गामाविष्यांच भूतानि धार्यामि अमोत्सा, वो गाम का अर्थ है पृथ्वी। मैं पृथ्वी के ऊपर विचरण करता रहा, तुष्ट मनाहा, संतुष्ट मन से, काय के लिए, कालम प्रतीक्षम, समय का इंतजार कर रहा था। ये शरीर छूटे, भगवान दिखेंगे दोबारा। दो और मेरे में गुण थे, विमद, मुझे कोई प्राउड नहीं था, मैं अहंकार नहीं था कि भगवान का दर्शन किया है मैंने, बच्चे ने 5 साल में भगवान ने मुझे दर्शन दिया, इसका मुझे मद नहीं था। और विमत्सर, और मैं ईर्ष्या भी नहीं करता था। तो ये है इसके तात्पर्य की पहली लाइन प्रभुपाद जी को देखना, और आप समझ जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं, ये देखो, ये ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। जस्ट दस I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeatedly reciting, ignoring all formalities of material world. ये किसका अर्थ है, all formalities of material world? किस वर्ड को, हत तृपहा, हत तृपहा, दो लोग क्या कहेंगे ये मैंने सोचना ही छोड़ दिया। ये प्रभुपाद ने किसको उपदेश दिया था कि जब कीर्तन करने जाओ लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करना। बहुत अर्ली डेज में। अब अमेरिका में प्रचार हुआ था और कहीं नहीं हुआ था, और प्रभुपाद अमेरिका से बाहर यूरोप में प्रचार करने के लिए 3 कपल को भेज रहे थे। उनको कहा था, उदाहरण देके कि जैसे आप दुनिया कहेगी इसकी चिंता मत करना, इन्हीं कपड़ों में ऐसे ही जाके कीर्तन करना शुरू कर देना। अत्रपाहा, इसका मतलब प्रचार कर कीर्तन करने जाए तो लोग क्या कहें इसकी चिंता मत करना, ये इसका हुआ। इग्नोरिंग ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ द मटेरियल, such chanting and remembering of the transcendental pastime Lord are all benedictory. Bhadrani. So doing I travel all over the earth. Gam, Priyatan. Fully satisfied, Manatripta. And free from pride and envy. Amada, Vimatsaraha. Kirtani means the pastime of Lord. Kalam pratiksham means expecting the time. That means when will that time come when I will become an associate of Lord? इंतजार था कि भगवान का पार्षद कब बनूंगा। I had no pride or selfishness.
भागवत में कहीं और उदाहरण आप पढ़ के आए हैं पहले स्कंद में, पहले अध्याय में दूसरा श्लोक है। अवरुध्यते तत्क्षणात् शुश्रुभि, भागवत के सुनने की इच्छा करोगे तो मैं उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाऊंगा। जहां मेरा कीर्तन होता है, आप कथा सुनने जाओगे तो मैं आपके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाऊंगा। तो नारद ऐसे कहते हैं। अब देखिए ये कमेंट्री को देखते हैं, जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं, दैट ही इज अट्रैक्टेड नॉट फॉर हिज ओन ग्लोरिफिकेशन बट टू गिव मर्सी टू दोज डिवोटीज। भगवान वहां इसलिए नहीं जाते हैं कि उनकी महिमा गाई जा रही है, परंतु उन भक्तों को के ऊपर कृपा करने के लिए वहां जाते हैं। तीर्थपाद मीन्स दैट वेर एवर लॉर्ड गोज बिकम ए होली प्लेस। भगवान जहां जाते हैं वो पवित्र स्थान हो जाता है। The Lord actually is controlled by bhakti and thus appears without being called. भक्ति जहां होगी भगवान अपने आप आएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य, टाइम तो हो गया मेरे ख्याल में, श्लोक 3-4 बजते हैं, क्या करेंगे? आपकी सेवा तो नहीं है किसी की जाने की, पूरा करें, सेवा है सबकी। क्या राय है? कल, ओके, पढ़ कोई कल पढ़ेंगे, इसमें क्या? अरे आपसे बात करने से मेरा गड़बड़ हो गया सब। श्लोक नंबर 34 पे थे ना?